Okay, Namaste everybody. Welcome back. Welcome back to MG Live on Business Insights. आज आपके साथ जो मैं शेयर करने वाला हूँ, it's a very beautiful, a very powerful insight on how you can become a number one choice for your customers. As a vendor, आप अपने customers के लिए the most preferred vendor कैसे बन सकते हो? एंड सब्जेक्ट है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसको सिंपल तरीके से समझेंगे. बट आई एम श्योर अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पिकअप कर लिया और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जीना शुरू किया, so nobody can stop you from becoming the most preferred vendor of your customer. That is for sure. That much I can guarantee. These business sites हम लोग ला रहे हैं week after week on YouTube, and the entire thought process is to reach out to entrepreneurs, to reach out to professionals, how they can become better professionals, and how they can make and create better organizations. तो ये सोच के साथ I share my insights on business जो पिछले 25 साल से मैं dealing with entrepreneurs, having them on board for various programs. जो भी मैंने समझा है, सीखा है पिछले 25 सालों में इनके साथ रह के, and of course by doing business the way I've been doing in different industries, right from consulting to construction to IT to hospitality. So I'm on board of 5 businesses. तो वहाँ से जो समझ आई है, उस समझ को सिंप्लीफाई करके मैं पेश करते रहता हूँ. I'm sure this today's insight will also be very beneficial. और अगर आपको insights पसंद आएंगी या आ रही है या आएंगी आपको, या पिछली insights आपको कोई they have been life transforming for you, so I would request that you like and you share our channel and share with your friends, those who are into business. I'm sure उनको भी काफी benefit होगा. I've spoken on leadership. I've spoken on team building. I've spoken on hiring. I've spoken on how to conduct interviews and what to take care of, and बहुत सारे insights मैंने share किए हैं पिछले काफी sessions में. अगर आपके miss हो गए, so you can go back and check on the YouTube channel. Good to see you joining, Shivani, Snehal, Jyotirling Engineering. Namaste everybody. Welcome to the morning session. And keep your questions with you ready. If you want to shoot some questions to me, you can shoot your questions. चलिए आज का चालू करते हैं insight. Now, this question which I've been asked time and again is what makes organizations great? कि क्या करें हम जिससे हमारी organization great हो जाए? क्या करें हम जिससे we can feel awesome about the work we are doing? So मेरा हमेशा उनसे question होता है कि you answer this question. What will make your organization great? Is it a great product? Is it the service which you're giving? Is it your team members? What is that thing which will make your organization great? And as they answer, I tell them that it's all. You cannot say that, okay, I'll have great team members, but not a great product, right? Or I'll have a great product, but not so great team members. Or I will have a great product and a great team with me, but my service to the customer can be compromised with. ऐसा नहीं होता ना. So these are all given. ये तो होना ही है that you have your product of a top-notch quality. ये तो होना ही चाहिए that your team should have the right skill sets with them to deal with the profiles which they are handling. The kind of service which you're giving to your customer, ये तो अच्छी होनी ही चाहिए. So ये given है, मतलब this is the way it should be for you to become great. मैं आज आपसे जो शेयर करूंगा उसमें 3 शब्द आएंगे. एंड ऑर्गेनाइजेशन एक शब्द है, राइट. सेकंड वर्ड है कंपटीशन या compete, एंड थर्ड है is the word called approach. मैं इन 3 शब्दों को मैं आपको अपनी शेयरिंग के बाद हल्का एक्सप्लेन करूंगा. The sharing which I'm going to do right now, इसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा. So you hold on to these 3 words called organization, competition or competing, and third is approach. अभी मैं आता हूं इन तीनों में से जो मैंने आपको मिडिल वर्ड बोला है compete, इसका हल्का सा फ्लेवर देता हूं आपको, फिर हम इसमें बाद में डिटेलिंग में और जाएंगे. So organizations kind of, they are in a competition. Even within the organization, there are people who are in a kind of a competition. So जब हम ये competition की बात करते हैं in the business world, so I've seen that there are 3 levels of competition which are worth talking about.
three levels or three kind of entry levels which we have for ourselves when we talk about competition. तो मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जो इस लेवल से नीचे हैं, लेकिन तीन लेवल है जिसमें हमें मूव करना चाहिए from one level to another to another. The first level, which we call as the entry level in business, is a level where organizations जो हैं वो effort डाल रही हैं, वो मेहनत कर रही हैं to kind of equalize with the competition. तो उनका एक competition है जो एक certain product दे रहा है, एक certain service दे रहा है, and ये organizations उन organizations के बराबर आना चाहती हैं. So currently their competition is here and they are here. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि अच्छा ये दे रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं, तो हम भी ये सर्विस दे सकते हैं. अच्छा इनके प्रोडक्ट में ये फीचर है, चलो हम भी ये फीचर देते हैं. अच्छा इनका सपोर्ट सिस्टम ऐसा है, तो हम भी एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ तक दे सकते हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये इक्वलाइज करने के लिए, ये बराबरी करने में अपने एफर्ट्स डालती हैं. सो दे हैव एन आई ऑन द कॉम्पिटिशन, दे कीप अ वॉच ऑन द कॉम्पिटिशन एंड दे आस्क ये लोग क्या कर रहे हैं. तो इनकी समझ, इनकी पूरी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, इनकी कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग इज कमिंग फ्रॉम द कंपटीशन, कि जो कंपटीशन कर रहा है कैन वी मैच अप टू दैट. एंड इनकी जो फिलॉसफी है बिजनेस करने की इज ऑल अबाउट ब्रिजिंग द गैप बिटवीन देम एंड द कंपटीशन. सो कंपटीशन इज हियर एंड दे आर हियर, सो दे वांट टू ब्रिज दिस गैप. क्या हम यहाँ आ सकते हैं? And the entire effort of the organization, the entire ecosystem of the organization, the entire way of conducting business of the organization is all about bridging this gap. तो ये इनका अगर मैं दो वर्ड्स में इनको अगर मैं वो बोलूं कि हाउ डू वी डिफाइन these organizations, these are me too organizations, कि सर मैं भी तो हूं. So if the customer is looking for a vendor or the prospective customer is looking for a vendor, so they go and they present and they say, sir, I am also there. Achha, this guy is giving 24-hour delivery in 24 hours. Sir, hum bhi 24 hours mein de sakte hain, sir. Achha, this company has a product which has such a so and so feature. Sir, ye feature to hum bhi de sakte hain aapko. तो ये कंपनीज के सारे एफर्ट, इनकी सारी सोच, इनकी सारी समझ इज ऑल अबाउट इक्वलाइजिंग. तो ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये थ्राइव नहीं करती, ये बहुत बड़ी नहीं बनती, लेकिन मरती भी नहीं है. दे सर्वाइव बिकॉज कस्टमर्स क्या होता है ना, दे ऑल्सो नीड some organizations which whom they can rely on if in case they are in an emergency. अच्छा कोई नहीं मिल रहा है, चलो इसको दे दो काम, क्योंकि ये भी ठीक ठाक कर ही लेता है, चलो इससे आज करा लेते हैं काम. They are not the preferred choice, but they are the choice wherein when if you have no other choice, then you go to these organizations. तो ये सोचना आपको है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इन दैट मी टू ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं भी हूं, आई एम ऑल्सो देयर, क्या आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनना है? डू यू वांट टू बी अ चॉइस ऑफ द कस्टमर विच इज द लास्ट चॉइस, चलो कोई नहीं है तो इसको काम दे दो? विल यू जस्ट वांट टू सर्वाइव एंड पुट ऑल द एफर्ट्स just to match up with the competition? क्योंकि बिजनेस में ना एफर्ट्स तो लगने हैं, चाहे आप बिजनेस में अपने 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 कंपटीशन में आप टॉप में हो या आप लोअर लेवल पे हो, मारामारी तो उतनी ही है, जान तो उतनी ही लगनी है. जब जान उतनी लगनी है, मारामारी उतनी करनी है, तो फिर क्यों नीचे लेवल पे हम एंट्री रखें अपने आप को, क्यों ना हम आगे बढ़े? ये सोच आपको अंदर अपने लानी पड़ेगी इफ यू आर देयर एज एन ऑर्गेनाइजेशन who is willing to become a great organization. तो मैंने आपसे कहा कि great organization क्या है? Is it because of a product? Is it because of a service? Is it because of the team? Or is it because of everything in the organization? And there's no rocket science to understand कि एक great organization जो है वो इन सब चीजों के कारण बनती है, right? So if you can become the most preferred choice of your customer, if you can become the first choice of the customer, this means something you're doing great which is in the mind of the customer. मैं आता हूं उस पॉइंट पे. तो मैंने आपको पहला लेवल ऑफ कंपटीशन बताया. द फर्स्ट लेवल ऑफ कंपटीशन इज द एंट्री लेवल, द क्वालिफाइंग लेवल. दैट इफ यू वांट टू क्वालिफाई एज अ कंपटीशन, तो कम से कम वो तो दो जो आपका कंपटीशन दे रहा है, राइट? और मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, मेरा विश्वास करो, मेजॉरिटी, व्हेन आई से मेजॉरिटी मींस मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये इसी में मारामारी चल रही है कि सर हम भी दे सकते हैं.
And I was talking to one of the manufacturers of one of the brands here, which is doing very well across the nation. They're into garments, and that too, uh, uh, garments for the girls in a certain age group. And they say कि हमारा forte. I asked them, what's your forte? Why does your product sell? Why there is demand for your products across the country? And immediately the MD of the company said, MG it's our designs. So we have designs which are wonderful designs. So he says I'm more focusing on the design. Production to ho jata hai. We have couple of units where we are producing it, but our forte is design. And he says when we design and we send the samples to our different distributors across who buy from us, तो हमारा डिजाइन कहीं लीक ना हो जाए, कहीं से कहीं somebody comes to know, because मार्केट में इतने लोग हैं जो हमारी कंपनी का वेट करते हैं कि इनका डिजाइन मार्केट में कब आ रहा है अप्रूवल के लिए, एंड दे सेंड देयर, उनके जासूस उनके लोग होते हैं, एंड दे वांट टू जस्ट फाइंड आउट डिजाइन क्या है, एंड देन दे कॉपी द डिजाइन. So they said that we are here in our level of competition, and there are companies who want to just copy us and be at this level कि हमारे पास भी तो देखो सेम डिजाइन है, हमारे पास भी तो देखो सेम फैब्रिक है. एंड इसमें क्या होता है कि जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहती हैं कि ये क्या करेंगे तो हम भी वो करेंगे, they never have the first mover advantage. They just survive. They just make some money to for their own expenses, अपना घर गाड़ी बना लेते हैं, but they're not able to make a dent in the market because they're equalizers, right? So that's the first level of competition. फिर इनसे एक नॉच ऊपर होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस. ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये कहती हैं कि सर हम भी कंपटीशन पे ध्यान रखेंगे कि कंपटीशन क्या दे रहा है, उसका सर्विस कैसा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसके उसके ओवरऑल टीम कैसी है, हम उस पर ध्यान रखेंगे, और जो वो देता है हम उससे ऊपर देंगे, हम उससे कुछ अच्छा देंगे. Now this is the second level of competition which organizations are into. इनकी संख्या थोड़ी कम है पहले वाले के मुकाबले, because here we are talking about organizations which are differentiators. ये differentiator बोलते हैं इनको, कहते हैं कि we are different than the competition. तो कंपटीशन अगर कहता है कि सर वी विल हैव द एंटायर प्रोजेक्ट right from designing to getting it approved, and right from manufacturing to installing and commissioning, ये अगर हम 8 महीने में करते हैं, and along with that we give you a 1 year kind of a support mechanism. So this company says, sir, 1 year क्या, we'll give you 5 years, 5 years of support for the project we have installed. तो ये कहते हैं कि कंपटीशन जो दे रहा है, we will expand the gap between us and the competition. जो पहले वाली कंपनी थी इक्वलाइजर, वो कहती है कैन वी मिनिमाइज दिस गैप, कैन वी ब्रिज द गैप. तो ये कंपटीशन है, ये मैं हूं, कैन आई ब्रिज दिस गैप. ये डिफरेंशिएटर क्या बोलता है कि ये कंपटीशन है, मैं एक्सपैंड करूंगा ये गैप को, दैट आई विल बी फार अबव द कंपटीशन. तो ये अपना इकोसिस्टम, ये अपनी सोच, ये अपनी समझ बिल्ड करते हैं कि कंपटीशन क्या दे रहा है, हम उससे एक कदम आगे हो सकते हैं क्या, हम उससे 2 कदम आगे हो सकते हैं क्या. In our products, in our service, in all our offerings, can we be few steps ahead? Now, this company is on innovative mode. ये innovations करती है, कुछ नए नए निकालती है, और लेकिन इसका फोकस भी कंपटीशन पे रहता है, because they're all the time thinking about what the competition is doing, and competition becomes the benchmark for them to do something better. Again, I go back to the earlier company. जो इक्वलाइजर है उसके लिए भी बेंचमार्क कंपटीशन है. वो कहता है कंपटीशन जो यहाँ पर है, कैन वी ब्रिज द गैप. सो वो कंपटीशन के नजदीक आना चाहती है. और जो सेकंड कंपनी जिसको मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएटर है, ये कंपनी जो डिफरेंशिएटर होती है, ये कंपनीज कहती है हम कंपटीशन पे ध्यान रखेंगे, और इस कंपटीशन पे ध्यान रख के हम बोलेंगे इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, व्हाट मोर कैन वी ऑफर. सो देयर philosophy is what more can we give. वो उनकी philosophy होती है कि सर ये तो है, इसके साथ this is also there and this much. पहले वाले का क्या था, सर I am also there. सेकंड वाले की philosophy है, सर ये तो है, we have something else along with this. So here I have shared with you 2 levels of competition. ना भी choice आपके हाथ में है कि आपको इन दोनों में से कहाँ रहना है.
पहला वाला सर्वाइव करेगा, मारा मारी उतनी होनी है, जान उतनी जानी है, एफर्ट्स उतने ही डलने हैं, बट पहले वाला जो है he will just survive, that company will just survive. Second वाले में the company will kind of thrive, will make money because it's always ahead of the competition. It's giving something more than the competition, so they become a preferred choice. They compared to the first one, right? So is it connecting with you that you're able to understand? I've just shared with you two levels of competition which are there. Now there is another level of competition which exists in the market, लेकिन इनकी संख्या, इनके numbers बड़े कम हैं. These are people who are you know very rare in the market. They are not found freely everywhere because you will find equalizers everywhere. अच्छा, उनके नीचे जो है जिनको पड़ी नहीं है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो सिर्फ बना रहे हैं और माल दे रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना आपको कंपटीशन समझती हैं. तो कहती है कैन आई मैच अप, सेकंड वाली बोलती है कैन आई बी बेटर. तो एक और लेवल की कंपनी है जिनकी, लेकिन इनकी पॉपुलेशन काफी कम है. ये बोलती हैं कंपनीज कि आई डोंट नो व्हाट द कंपटीशन इज डूइंग, आई डोंट हैव मच. Just give me a second. I am just troubled by this light. Just sorry for that. So ये जो थर्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कहती हैं कि आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट competition कर रहा है. Let them do whatever they want to do. They will do their best. Let me focus on what I can do. तो ये थर्ड लेवल की कंपनी जिनको हम बोलते हैं पोटेंशियल कैपिंग कंपनीज. सो पहले वाली इक्वलाइजर थी, सेकंड वाली जो थी वो डिफरेंशिएटर थी बिकॉज दे ब्रिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट सर्विस. ये जो कंपनी है तीसरी वाली, ये कहती है मेरा पोटेंशियल क्या है. सो माय पोटेंशियल इज हियर. एंड देन दे से कस्टमर को हम दे क्या रहे हैं. अच्छा, अभी हम कस्टमर को ये दे रहे हैं लेकिन हमारा पोटेंशियल तो इधर है. सो दे ऑलवेज वांट टू ब्रिज द गैप बिटवीन देयर पोटेंशियल एंड द कस्टमर्स रियलिटी. इस समय कस्टमर की रियलिटी क्या है, ये इन दोनों के बीच में खेलते रहते हैं. दे डोंट वरी अबाउट द कंपटीशन. द कंपटीशन कैन बी अहेड, द कंपटीशन कैन बी बिहाइंड. वी डोंट वरी. हम क्या कर सकते हैं, हमारी काबिलियत क्या है, हमारे पोटेंशियल क्या है. लेट अस फोकस ऑन अ पोटेंशियल and let us focus on our current offerings, and from this potential to the current offerings to the customer, now can we bridge this gap. Now समझो इस बात से, these are people, अगर if an organization lives like this, if an organization conducts itself like this, कि वो अपने potential पे focus करके कहती है कि इस potential से हम क्या दे सकते हैं customer को, तो इनका क्या question रहेगा हमेशा, ये हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने में लगे रहेंगे. ये कंपटीशन का वेट नहीं करेंगे कि तुम अच्छा बनो तो हम तुमसे अच्छे बने, या तुम अच्छा बनो तो हम तुम्हारे बराबर आ जाए. ये उसकी बात नहीं करेंगे. ये कहेंगे यार हम क्या काबिल हैं, एंड फ्रॉम आवर ओन कैपेसिटी व्हाट बेस्ट वी कैन डू. सो दे विल फोकस ऑन टू थिंग्स. नंबर वन, दे विल वांट टू कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल, एंड नंबर टू, दे विल कीप ऑन यूजिंग और मैक्सिमाइजिंग देयर पोटेंशियल टू सर्व द कस्टमर. तो जो उनका कस्टमर है वो कहेंगे यार इस पोटेंशियल से इस कस्टमर को कैसे सर्व करें. एंड दैट्स हाउ दे बिकम कंपनीज व्हिच कीप ऑन एडिंग वैल्यू. बिकॉज व्हाट इज एडिंग वैल्यू? एडिंग वैल्यू इज constantly asking question to yourself, what else can I do, what more can I do. It is not that the customer is demanding it. It is that you are asking this question every day because you see that your potential is here and you say इस potential को मैं कैसे use करके और अच्छा क्या दे सकता हूँ. So you don't wait for your competition to do things to make you, to compel you to do things better. You're not waiting for the customer to come back to you and say भाई तुम्हारे प्रोडक्ट में ये कमी है या फिर तुम ये और दे सकते हो क्या. ये कंपनी जो है सोचती रहती है कि और क्या कर सकते हैं, और उस और क्या कर सकते हैं में जो आंसर निकलता है उस आंसर से दे गो टू द कॉम्पिटिशन, टू द कस्टमर, एंड टू द कस्टमर दे से सर हमने सोचा आपके बारे में एंड वी रियलाइज दैट यू हैव सो एंड सो रिक्वायरमेंट, एंड हमने उसके लिए एक नया प्रोडक्ट निकाला है.
हमने उसके लिए एक नया एड ऑन निकाला है। हमने देखा कि आप बार बार हमसे जो है यू हैव टू कम बैक टू अस फॉर स्पेयर पार्ट्स, एंड हमने सोचा कि आप स्पेयर पार्ट इतना क्यों आपका लग रहा है. सो वी रियलाइज दैट यू आर यूजिंग योर प्रोडक्ट इन इन यू नो इन सो एंड सो वे. तो हमने उसी के लिए एक सॉल्यूशन निकाला जिसका आपका स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट कम हो जाए. Or we have got a depot right next to your factory where you will spend less time in securing the spares. तो हम वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं जिससे वो कस्टमर को और अच्छा कुछ दे पाए. So they're not, customer is not complaining. Customer is not going to somebody else. Customer is there with them. Customer is happy. Customer is not complaining. But these guys, they keep on thinking, what more can we do? What else can we do? इसका मतलब क्या है? ये organization is on the path of excellence. Because excellence says it is not in comparison with the world what you become. It is in comparison to your yesterday, what are you becoming today? Is there a difference? Is there a betterment? अगर आप अपने अतीत से आज अच्छे बन गए हो तो you're on a path of excellence. अगर आप अपने कल से आज अच्छे बन गए हो, this means you are living a life of excellence. कि आप एक्सेल कर रहे हो, अपने काम, प्रेजेंट काम करने के तरीके में आप एक्सेल कर रहे हो. तो जो कंपनी हर दिन रोज एक्सेल करने के लिए उतावली होगी, फिर वो कस्टमर्स को अच्छा क्यों नहीं देगी? जब कस्टमर्स को बिना मांगे कुछ नया अच्छा मिलेगा, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की मोस्ट प्रिफर्ड वेंडर क्यों नहीं होगी? वो नंबर वन चॉइस क्यों नहीं बनेगी? कि कस्टमर्स को बिना मांगे आप उनको कुछ ऐसा देते हो जिससे उनके प्रोडक्टिविटी, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए. I'm able to connect with you on this, right? So there are three levels of competition you can be in. You can either be in that equalizer कि सर मैं हूं ना, मैं भी तो हूं, मुझे भी तो मेरे बारे में तो सोचिए, सर मैंने भी तो टेंडर भरा है, सर मैंने भी तो वही स्पेक्स दिए हैं, सर मैंने भी तो वही सर्विसेज का ऑफरिंग दी है. Either you can be there or you can be here and you say, sir, the competition is offering so and so, I'm offering a better price. I'm offering a better, delivery schedule. I'm offering one more, two, three features more. आप इसमें हो सकते हो. या फिर आप कहते हो, sir, you don't even know how much you're losing out on your transport, how much you're losing out on the bottom line by sending your team to procure the products again and again. तो हमने एक डिपो ही खोल दिया है सर आपके बगल में, या हमने सर ये प्रोडक्ट का ये फीचर ही चेंज कर दिया जिससे आपकी जो है ये रिक्वायरमेंट बार बार फ्रीक्वेंटली आपके स्पेयर्स जो है रिक्वायरमेंट ना पड़े. एंड द कस्टमर सेज वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कैसा भी हो सकता है. तो ऐसी भी कंपनीज हैं. द क्वेश्चन इज which organization you want to create. Yesterday I was there at one of my my students' place, and he's opened a lovely a store which is into providing the best of tailored garments to people. And मेरा एक उसको मालूम है मेरे बारे में कि I have never, if I'm wearing a shirt, if I'm wearing a trouser, very rare, very seldom I will have a ready-made shirt. Very rare. I will have my trousers and my shirts and my jackets stitched. I love having customized my jackets and my trousers. So मैं बहुत rare जाके कहीं स्टोर में जाके रेडीमेड में कोई जैकेट खरीद लूंगा और वो पहन लूंगा. I will have it stitched. So he knew and he messaged me, sir, मैं नया खोल रहा हूँ होटल, आप आइए. And yesterday after I couldn't go early, but I went there yesterday. So it was such a wonderful experience कि एक टेलरिंग शॉप ऐसी भी हो सकती है where the moment you enter the store, you have taken an appointment. Without appointment you can't go inside the store. Imagine karo there's a tailoring shop and you have taken an appointment, and then there are people who are waiting for you. They will take you to the store. They will make you see the various offerings there. They have their fabrics, they have their designs, they have their in-house tailoring shop, which is just an open kitchen hota hai na kisi restaurant mein, you can see the kitchen. Here you can see the entire tailoring outfit there. कि टेलर्स बैठे हुए हैं, दे स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, कोई स्टिच कर रहा है, कोई काज लगा रहा है, कोई बटन लगा रहा है, एंड यू कैन सी इट फ्रॉम आउटसाइड. देयर इज वर्क हैपनिंग देयर. सो यू गेट द फील ऑफ अ फैक्ट्री देयर फ्रॉम आउटसाइड. अच्छा ऐसे बनते हैं कपड़े. सो दे टेक यू अराउंड एंड दे मेक यू अंडरस्टैंड द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ हाउ अ गारमेंट इज स्टिच्ड एंड हाउ different garments are made. And then once you have done the tour of the store, then there's a room where they make you sit, and
then the discussions start as to what you want to do. So there's an entire flow, there's an entire process. Now, Abhi, as a customer, I don't want it. I didn't feel that I needed that. But the moment I was inside, I said, हाँ यार ये तो चाहिए था अपने को, ऐसा कोई हमसे पूछे, ऐसा हमें कोई दिखाए, ऐसा हमें कोई बताए. It was not there, but after going through that, I felt, अरे this is so good. ये तो होना चाहिए. And suddenly, all those years, I looked back and I said, अरे अगर ये पहले होता तो कितना अच्छा होता. So many times customers are not even aware of what they need till they go through an experience and they say, हाँ ये चाहिए था. So जो थर्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, वो वैसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कस्टमर को नहीं मालूम उसको क्या चाहिए, वो भी देने के लिए काबिल रहते हैं. Because they have been asking themselves this question, what else can I do? What more can I do? Right? And this organization, उसका नाम है the Man Project. The beautiful on Vagoli on Nagar Road, this outlet, the store is there. So I want you to understand what the third level is. The third level is you constantly ask, what can I do to make the customer experience out of the world? Because it's the customer जो हमारा पैसा दे रहा है. It's a customer which is giving us our salaries, which is giving us all that which we are looking at. Without the customers, liking and happiness, फिर हमें क्या मिलेगा? तो दो चीजें, कस्टमर को जो मिल रहा है, एक हमारा पोटेंशियल क्या है, क्या हम और देने के काबिल हैं? एंड आंसर इज यस. तो क्यों ना वो दें? क्या हम अपने आज को कल से बेहतर बना सकते हैं? आंसर इज यस. तो क्यों ना अपने आज को बेहतर बनाएं? Now this is the third level of competition. Now if you were to go back, is it connecting to you what I've shared? Anji. You can post your questions, or maybe what's everybody? Yeah, those who have joined in late, I'm sure you would have caught up with me by now. Okay. Keep on posting your questions if you have any, and your insights on what I've shared with you. Now, I shared with you that there are three words which I speak on. One is organization, second is competition, and third is the approach. Competition, I've already spoken about the competition. I've already spoken about the equalizer, the differentiator, and the people who ask questions from their potential, or they're adding value by questioning what is the potential and what is the customer's requirement. Now, let's understand the word organization. Simple hai. Organization is nothing else but a group of people who come together, and they are kind of chasing a common goal or a common objective. और ऐसा हमने एक सोचा कि भाई हमने ये गोल कुछ अचीव करना है, तो ये हमसे तो होगा नहीं अकेले, तो हमने एक टीम बनाई, और उस टीम में हमने कहा चलो मिलके ये गोल पूरा करते हैं. क्योंकि जब टीम आती है साथ में, तो हम कहते हैं यार मैं अकेले ये सारे काम नहीं कर सकता, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो है प्रोडक्शन पे जाता हूँ, तुम सेल्स देखो, तुम अकाउंटिंग देखो, तुम जो है प्रोक्योरमेंट देखो. तो ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपने अपने स्किल सेट्स लेके आते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड आई एम श्योर ये कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए. इट्स अ सिंपल थिंग फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. ना जो मैंने आपसे बोला कि इक्वलाइजर हो, डिफरेंशिएटर हो, या फिर वैल्यू एडिंग कंपनी हो, ये इक्वलाइजिंग का काम या डिफरेंशिएटर का काम या वैल्यू एडिंग का काम जो है किसी एक इंसान का नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन वैसे बन जाती है. सो द एंटायर इफ यू आर इनटू द फर्स्ट लेवल ऑफ कंपटीशन, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, इट इज लिविंग, और इट इज बाय डिफॉल्ट लिविंग एन इक्वलाइजर्स लाइफ, कि जहां आपके हर डिपार्टमेंट में हर लेवल के लोग जो हैं, दे आर काइंड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, हाउ डू आई लेवल अप विद द कंपटीशन. कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सब लोग कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए वैसे लेवल की बात कर रहे हैं. अगर आप
डिफरेंशिएटर में है, तो जाने जाने में पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंशिएटर बनने के लिए रेडी हो गई है। अगर आप वैल्यू एडेड लेवल पे हैं, तो जाने अनजाने में नहीं, जाने अनजाने में नहीं, जानबूझ के आप जो है यू आर क्रिएटिंग अ वैल्यू एडेड एनवायरनमेंट की ऑफिस। इसका मतलब ये एक एमडी की सोच नहीं है, या एक टॉप लीडरशिप की सोच नहीं है कि हम और क्या करें, हम अपने पोटेंशियल को कैसे मैक्सिमाइज करें। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सोच है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जीने का तरीका है। सो इट इज नॉट जस्ट वन पर्सन्स थॉट प्रोसेस, इट इज एवरीबॉडीज थॉट प्रोसेस। एक बार मैं आई शेयर दिस एग्जांपल अ फ्यू टाइम्स, लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल। व्हेन आई से कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सोच है कि वो कैसे वैल्यू ऐड करे। I happened to be at one of my Chrysalis office some years back, and I was doing personal coaching for that Chrysalis, and mera assignments were over, but the relationships they stay for life. So one day I was passing by his office, and I just messaged him that चलो चाय पीने आता हूँ, and he says MG आप आ जाओ, I'll be waiting for you. तो मैं उनके ऑफिस गया चाय पीने के लिए, चाय पी, बट वो बोलते ना कि आदत से मजबूत. So I gave him some insights on whatever I felt I should give him for in that half an hour or so, and I wanted to give him some kind of a graph which you should work on. So I asked him, can I get a piece of paper? Can I get some paper and some pen? Because मैं ऐसे ही गया था मिलने के लिए, चाय पीने के लिए. I didn't have anything ready with me. So he called his office boy and he says, हजारे जरा पेपर लेके आओ ना, सर को पेपर चाहिए. After a couple of minutes, his door opened and this office boy called Hazare, he walked in. And trust me, what he walked in was with not just a piece of A4 size paper. He had around 10-12 sheets of A4 size paper. और वो 10-12 शीट्स थी, वो एक राइटिंग पैड के अंदर ऐसा they were kind of stuck in that writing pad जो हम यूज करते हैं ना एग्जामिनेशन में, what do you call that writing pad, और उसके अंदर उसको क्लिप के अंदर वो थी, so that I have a place to write, I have comfort in writing. Then he had 3 color pens. He had a black and a green and a red pen, because somewhere he had heard me use different colors to write different things. And then he had a pencil, he had a sharpener, and he had an eraser. And वो उसने पूरा सामान मेरे बगल में रख दिया. And I looked at him and I smiled and I said, अरे तेरे को तो सर ने बोला था कि तू सिर्फ पेपर लेके आ, तू ये सब लेके आया. कह रहे सर, आप ही ने सिखाया सर को कि जो करते हो उतना तो करो और उससे और ऊपर करने की सोच रखो. Because I had trained the organization and the entire team in the organization some time back that give you 100% and a little more in whatever you do. Give you 100% and a little more. क्योंकि आपका पोटेंशियल और देने के काबिल होता है. जैसे आप ही ने सिखाया. And I was so thrilled by this very approach. I said, top level पे तो है ही approach. But even at the lowest level, we talk about the office boy. If he has also started thinking that in my work, in my job, can I value add? मेरे क्षमता है, मेरी potential है. Can I reach to that potential? मेरे से मांगा पेपर है, but मेरा potential तो ये सब देने का है ना. Can I do that? So at every level of the organization, if people can have the approach, and that's what my third word was, approach. The approach of the entire team has to be one of value addition. Then only the organization becomes a value-added organization. It is not the job of 1 or 2 or 3 people at the top. हर इंसान अपने अपने काम में, चाहे वो प्रोक्योरमेंट का है तो वो सोच रहा है कि इसमें मैं कैसे वैल्यू ऐड करूं. कोई आदमी उसमें है, सेल्स में है तो कहता है कि हाउ कैन आई वैल्यू ऐड इन व्हाट आई एम डूइंग. सो एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट मेरा पोटेंशियल क्या है, और मैं जो मेरे दे रहा हूं, मेरे थ्रू जो कस्टमर को जा रहा है वो ये है. कैन आई जस्ट वर्क ऑन इट एंड मेक इट बेटर एंड बेटर एंड बेटर. फिर कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता, फिर किसी का कंपैरिजन का सवाल नहीं उठता. And that's why these organizations, they go on not just to thrive, they go on to make a huge dent in the market, and they become the most preferred, the number one choice of the customer. So सोचिएगा, आज जब आप ये insights के बारे में जब मैंने आपसे शेयर किया, सोचिएगा इसके बारे में and see as to how you can be a value added player, and कैसे आप value add कर सकते हो. So these are insights from my business programs which I've been conducting. So मेरा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है रस समझती. कभी आपको मौका मिले, कभी as an entrepreneur you feel that you should be a part of my program, तो आप लोग आइएगा उस प्रोग्राम में. It's a beautiful journey. अभी हमने इसको फिर रिवैम्प किया है, फिर हमने सोचा इसको और अच्छा कैसे करें. Again, I'm just giving an example from my life.
So we were offering a program in a certain way. फिर हमने उसको सोचा कि what else can we do? Because we keep on asking ourselves this question: what more can we do? What more can we do? So we have now transformed the program into a 7-month program. The Arasamasti, from a one intervention 4-day program, it has become a 13 session expanded program, which we are launching in January. And I'm looking forward to it. It's a beautiful, lovely program which has come out after a lot of manthan, a lot of brainstorming. वो पूरा एक अच्छा डिजाइन हुआ है, सेशन प्लान अच्छा बना है. एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपको लगता है दैट योर ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव इनटू दिस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस and be the number one choice for your customers, then I think you should think of doing that program with me. And I think in those 7 months, a lot of transformation will happen. The way you will do business will be so very different. And yesterday when I was there at my student's place, नीलेश के मैं जब स्टोर में था, he says, sir, whatever I have done here in the store is because of what I've learned and picked up from you. And he said one more thing. He says, sir, आपने जो सिखाया वो तो मैंने pick up किया, but आप जैसे जी रहे हो वो भी मैंने pick up किया. And I said, this is what it is. So he says, every thought process, somewhere you are there. And I said, अभी रुलाएगा क्या? But he says, कि every process you are somewhere, you are there in some way, which made me ask, can it be done better? Can it be done better? So I think that's a gist for today. And so make a great day for yourself, and work on making your organization become one where the customer says, this is the organization I would love to go to. And all the very best to you. And I'll see you next week, next Wednesday, with one more business insight. And would be happy to have your questions if you have any. And all those who are going to watch this video after it has been uploaded on YouTube, we have some questions you can shoot. Let's see if we can answer those questions. And also you can share your subjects. कि आपको कौन से subjects में, business के subjects में क्या insight चाहिए. Let's see if I can do justice to your demands and requirements. We'll see what we can do for that. Till then, stay alive, stay excited, stay happy, and I'll see you next Wednesday. Thank you so much. God bless you. Namaste, everybody.